Hello guys, so today I'm gonna tell you the maths trick. It is not the same that I told in the last video, it is very much different from that. Okay, so here I have taken two numbers 15 into 15. So the first rule of the trick says that the sum of the last two digits should be 10. So 5 plus 5 is 10. 5 plus 5 is 10. Okay, so first rule is successful. Now, second rule says that the initial digits of the numbers should be same. 1 and 1 same. So two rules were there and both were applied, so means we will be able to solve this sum according to the trick. So how to solve it? First we need to multiply these last two numbers. 5 into 5 is 25, and now we will not multiply one by one, we will multiply one by its next number, that is after 1 2 comes, so we will multiply 1 into 2. So answer is 225. Final answer. Let's solve the next sum. So the first rule is sum of the last two digits should be 10. 7 plus 3 is 10. Now the initial number should be same. Yes, they are same. So now 3 sevens are 21. We will not do 2 twos are 4. We will do 2 into 3. So 2 threes are 6. Answer 621. So now let's do the next sum. 45 into 45. The sum of the last two digits is 10. These two, 5 and 5 plus 5 is 10. Now initial numbers are also same. No need to add them. So now both the rules are applied. So we will do 5 into 5 is 25 and 4 into 5. Okay, because after 4 5 comes, so 4 into 5 20. So the answer is 2025. Okay, now I'll explain this trick in Hindi also. पहले हमने लास्ट टू डिजिट्स को देखना है. इस नंबर के लास्ट टू डिजिट्स क्या हैं? 6 और 4. अब जो 6 और 4 हैं उनको हमने प्लस करना है, और अगर प्लस करके हमारा आंसर 10 आता है तो हमारा पहला रूल सक्सेसफुल होता है. और जो हमारे पहले दो डिजिट हैं 3 3, ये दोनों सेम हैं, तो सेकंड रूल भी सक्सेसफुल है. सो अब हम ये ट्रिक कर सकते हैं. चलो लेट्स सॉल्व. अब हमने 6 और 4 को मल्टीप्लाई करना है. 24. 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना. 3 के बाद अगला डिजिट क्या आता है? 4. तो 3 4s are 12. 12 को भी एज इट इज़ लिख देना है. इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होएगा. ये नहीं कि 24 आ रहा है तो 2 को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया. नो. आंसर इज इक्वल्स टू 12 24. नेक्स्ट सम 59 into 51. So 9 plus 1 is 10. 9 ones are let's take this one. 5 and 5. Okay.
9 ones are 9. 5 into 6, 30. But the answer is not this. This is the wrong answer. Answer is 3009. 3009. Okay, if we multiply in the simple way, our answer will come this. So, there is also one more rule for this. That is कि अगर हमारे जो दो रूल्स हैं वो नंबर पे सक्सेसफुल हो रहे हैं तो ट्रिक लगेगी ही लगेगी. बट अगर ये जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं इनको जब इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो सिंगल डिजिट में आ रहा है तो फिर हमारे को उसके आगे एक 0 ऐड करना है. इट मीन्स दैट इफ both of the rules are successful, then the trick will be also successful. But if the product of the last two digits is coming as single digit, so we need to add 0 at the left of the number or at the front of that number. ओके, सो मैंने यहाँ पे एक 0 ऐड कर दिया. सो माई आंसर इज 3009. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. आई विल टेक 29 into 21. Easy one. So 9 ones are, both the rules are applied. I am knowing that. 9 ones are 9. अब मेरा सिंगल डिजिट आ रहा है. द प्रोडक्ट इज कमिंग एज सिंगल डिजिट, सो आई नीड टू ऐड 1 0 इन फ्रंट ऑफ इट और एट द लेफ्ट साइड ऑफ इट. ओके, तो मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया. उसके बाद आई विल मल्टीप्लाई 2 by 3. 2 3s are 6. ओके, सो आंसर इज 609. हमने यहाँ पे जो किया था 7 into 3. 7 into 3 is 27. So no need to put 0 at the left side of the number because the answer, 21 will be the answer. No need to apply 0 because the answer is coming in 2 digits only. If the answer is coming in 1 digit, then only apply 0. So here's the homework. Please solve these questions according to the trick and then post the answers in the comment box. Thank you. Bye bye.